This is paper 4-2, November 22. First question of the paper is from work, power and energy. The statement of the question: a cyclist is riding a bicycle along a straight horizontal road AB of length 50 meters. The cyclist starts from rest at A and reaches a speed 6 meters per second at B. Horizontal road AB. This is horizontal road AB. This is a cyclist. This point is A and this is B. Length of AB is 50 meters. Rest. Start from rest. Initial speed is 0 and the speed at point B is 6 meters per second. The cyclist produces a constant driving force of magnitude 100 न्यूटन. तो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन. There is a resistance force and work done against the resistance force from A to B is 3560 joule. Work against friction हमें given है 3560 joule. Find the total mass of the cyclist and bicycle. Now in this question we will use work energy relation, that is work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. Work done by driving force is F into D 100 into 50. Work against friction, that is given 3560 plus change in mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी. तो वो है 1/2 m v स्केयर माइनस यू स्केयर. तो यहाँ से हम m फाइंड करेंगे. दिस बिकम्स 5,3560. दिस इज 18m. 6 स्केयर 36 होता है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से m हमारे पास मैथ जो है वो 80 किलोग्राम आ जाएगा. नो सेकंड क्वेश्चन. The particle of mass 0.4 kg is in limiting equilibrium on a plane inclined 30 degree to the horizontal. ये क्वेश्चन फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम का है. इसके लिए डायग्राम बनाएंगे हम. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में 0.4 kg mass. Show that coefficient of friction between the particle and the plane is 1/3 and √3. पार्ट ए. ये इसके लिए डायग्राम है. Angle is 30 degree with the horizontal. This is a particle P. Weight vertically downward mg. Components ये एंगल 30 होगा.
this component mg sine 30 degree, mg cos 30 degree, normal reaction, इक्विलिब्रियम है तो वेट का कंपोनेंट जो है एक्टिंग अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड, फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. Since the system is in limiting equilibrium, so force of friction will be equal to component of the weight. We have to find coefficient of friction, so F will be equal to force of friction mg sin 30 degree. तो यहाँ से F फाइंड हो जाएगा. M हमारे पास है 0.4, G is 10, sin 30 1/2. तो यहाँ से F जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 न्यूटन. इन द सेम वे वी विल फाइंड R, क्योंकि म्यू जो होता है वो F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F ओवर R होता है, तो R फाइंड करेंगे. R जो है वो वेट के कंपोनेंट के इक्वल होगा. R इज इक्वल टू mg, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में R इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री, और m इज 0.4, g इज 10. cos 30 डिग्री जो है वो √3/2 होता है. इसको आपने डेसिमल में नहीं लेना क्योंकि आपने आंसर जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में देना है 1/3 तो सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास r जो है वो आ जाएगा 2/3. तो ये f है हमारे पास और r भी है, तो यहाँ म्यू हम फाइंड कर सकते हैं. म्यू विल बी इक्वल टू f इज 2 ओवर r इज 2/3. तो r से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास म्यू जो है वो 1/√3 आ जाता है. तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो दिस बिकम्स 1/3 ये हमारा आंसर होगा. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 7.2 न्यूटन इज नाउ अप्लाइड टू particle P directly up a line of greater slope of plane. अब हम फिर से इस पार्ट के लिए इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन. एंगल इज 30 degree with the horizontal. This is the particle P, और the force is acting on this 7.2 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई होती है डायरेक्टली अप अ लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप. 7.2 न्यूटन फोर्स, वेट mg. तो कंपोनेंट हमारे पास वेट को रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट फाइंड करेंगे. इसके कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे mg साइन 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन. तो सिंस द point since the force of magnitude 7 Newton is applied directly upward, so direction of the friction will be downward. Friction will be mu r. Given that P starts from rest, this is point P. इस पार्टिकल का नाम जो है वो P है.
Given that P start from rest, find the time. Initial speed is 0 because start from rest है. Initial speed is 0. So P start from rest, find the time it takes for P to move 1 meter up the plane. तो हमने टाइम फाइंड करना है. It takes for P to move 1 meter up the plane. So first we will find acceleration. With which acceleration it is moving upward. तो उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे. 7.2 न्यूटन फोर्स इज along the plane upward माइनस वेट का कंपोनेंट mg साइन 30 डिग्री माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन minus mu r is equal to ma. M is 0.4 a. तो लो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन की. 7.2 माइनस एम जी साइन 30 1/2. म्यू इज अंडर रूट 3/3. R is mg cos 30. mg cos 30 0.4 g cos 30 is equal to ma. तो यहाँ पे कैलकुलेटर से ये हमारे पास आएगा 5.2 minus 2 is equal to 0.4 a. From here a is equal to 8 meter per second square. ये हमारे पास acceleration आ गया, but we have to find the time taken to move 1 meter up the plane. Distance along the plane given है, that is 1. अब हम यहाँ पे find करते हैं time. Initial speed is 0 because start from rest. Distance is 1 meter along the plane. We will use this equation. S is equal to ut plus half at square. So 1 initial speed is 0 plus 1/2 a is 8t square. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमारे पास आ जाता है 0.5 सेकेंड. 0.5 सेकेंड. This is the answer. Now next question number 3. A particle of mass 0.3 kg is held at rest. फिगर बनी हुई है by two light inextensible strings. One string is attached at an angle 60 degree to the horizontal ceiling. ये horizontal ceiling है, जो upper line है horizontal ceiling है. The other string is attached at an angle alpha to the vertical wall. Right side पे wall है. The tension in the string attached to the ceiling is 4 Newton. Tension in the string attached to the ceiling. This means that tension in this string, the tension की direction towards hinge होती है. So this is 4 Newton. T1 is equal to 4. Find the tension in the string which is attached to the wall and find the value of alpha. We have to find tension on this side. This is T2
सपोज दिस इज T2, ये वर्टिकल वॉल के साथ जो स्प्रिंग अटैच हो रही है उसकी टेंशन को T2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। नो फर्स्ट वी रिजॉल्व First, we resolve the forces acting on this system. वो टेंशन T1 है और T2 है, हमने इसको रिजॉल्व करके इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। द वेट ऑफ द पार्टिकल इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ हम इसको शो करते हैं कि वर्टिकल डाउनवर्ड है, mg 0.3 g। और ये टेंशन T1 जो है इसको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट्स आएंगे। ये एक कंपोनेंट इसका ये होगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल, और दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज 4, T1 4 है, 4 साइन 60, दिस इज 4 cos 60। इन द सेम वे वी रिजॉल्व T2, एक ये कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये है। तो दिस इज T2 sin अल्फा, this is T2 cos alpha. Now we have found all the components of the forces acting on the system. Since the mass 0.3 kg is held at rest, तो लेफ्टवर्ड फोर्सेस जो हैं वो राइटवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी, अपवर्ड फोर्स वर्टिकल फोर्सेस जो हैं वो भी इक्वल होंगी। T2 sin अल्फा राइट वर्ड है, फोर्स बुक 4 cos 60 डिग्री के इक्वल होगी। तो सो T2 sin अल्फा इज इक्वल टू 4 cos 60 डिग्री। 4 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, तो ये कैंसिल आउट होकर T2 sin अल्फा जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नो अपवर्ड फोर्सेस T2 cos अल्फा इज डाउनवर्ड, T2 cos अल्फा प्लस एक और फोर्स डाउनवर्ड है, दैट इज द वेट ऑफ द पार्टिकल 0.3 g, दैट बिकम्स 3, g की वैल्यू 10 होती है, इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस 4 sin 60 डिग्री। तो यहाँ से T2 cos अल्फा जो है 4 sin 60 डिग्री माइनस 3 आ जाएगा, 4 sin 60 डिग्री माइनस 3, T2 cos अल्फा विल बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.464 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नो solving these two equations simultaneously, we will for simultaneous process we divide these two equations, dividing equation 1 and 2, T2 sin alpha, T2 sin alpha over T2 cos alpha is equal to 2 over 0.464
T2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से tan अल्फा आपके पास साइन ओवर कॉस tan होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू 2/0.464, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस हो जाएगा, दैट इज 76.9 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन एनी इक्वेशन, we will put this value of alpha in equation number 1. So from 1 equation 1 t2 is equal to 2 over sin alpha, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है t2 2 over sin 76.9 degree, so we get t2 is equal to 2.05 Newton. This is the answer. Now next question number 4. A car of mass 1200 kg is traveling along a straight horizontal road AB. This is horizontal road AB. This is a car. This point is A and this is B. Mass of the car is 1200 kg and there is a constant resistance force of magnitude 500. This is the opposing force. F is equal to 500 Newton. The driving force is on this side. When car passes the point A, it has speed 15 meter per second. A point पे speed 15 मीटर पर सेकंड है and the acceleration is 0.8. यहाँ पे acceleration जो है 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. Find the power of the car's engine at the point A. तो हमने पावर फाइंड करनी है इंजन की. तो सो ड्राइविंग फोर्स विल बी, क्योंकि यहाँ पे पावर का फार्मूला होता है F इंटू वी. यहाँ से ड्राइविंग फोर्स जो होगी वो होगी P ओवर V. तो ये P ओवर V जो है, जैसे ड्राइविंग फोर्स वो मूविंग rightward, friction upward. So now we will use Newton's second law of motion. P over V, P over V, V is 15 minus frictional force is equal to MA. M is 1200 and A is 0.8. यहाँ से P over 15 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा P over 15 minus 500 is equal to 960. P over 15 is equal to 1460. From here P is equal to 21900 watt. ये हमारा आंसर है. So next part of this question is the car continues to work with this power as it travels from A to B. A से B तक वही पावर है इसमें जो हमने फाइंड की हुई है. The car takes 53 seconds to travel from A to B. A से B तक हमारे पास टाइम भी गिवन है 53 सेकेंड
एंड द स्पीड ऑफ द कार इज 32 मीटर। ये हमारा डाटा है। पी इज पावर 21900, वी इज 32 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 53 सेकेंड। Show that the distance AB is 1362.6। तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी रिलेशन यूज करेंगे। वर्क एनर्जी रिलेशन वो क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर फोर्स भी है और ड्राइविंग फोर्स भी है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सिंस P is given and time is also given, so we will use this formula of power, वर्क ओवर टाइम। यहाँ से वर्क जो है वो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स वो आ जाएगा P इंटू टी। तो ये P हमारे पास 21900 और टाइम इज 53 सेकेंड। तो ये वर्क हमारे पास डन बाय ड्राइविंग फोर्स आएगा 1160700। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला में। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज 1160700। Work done by against force of friction, that is F into D. F is 500 and D is AB। AB distance हमने find करना है। तो this is 500 into AB। This is work against friction plus change in mechanical energy। उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है, सिर्फ उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी। The change in kinetic energy 1/2 m v square minus u square। v square is 32, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पीड b पे वो 32 मीटर पर सेकंड है। तो हमारे पास a पे स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो 32 स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1160700 इज इक्वल टू 500 AB। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 479400। यहाँ से हम AB कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1362.6 जो हमने शो करना था मीटर।